ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫਰੈਂਡਸ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਕੋਚਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਆਫ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ MCQ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ MCQs ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੁਣੇ ਪਟਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਪਰ MCQs ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ। ਚਲਿਏ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੰਟ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੰਟ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ VP ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਰੰਟ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਕੀ ਨੇ? ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਰਮਰ MP and is a senior BJP leader from Madhya Pradesh. He took charge as Governor of Punjab in August 2021. Before him, Bipin Singh Badnor was the Governor of Punjab. The current Governor of Punjab is Banwari Lal Purohit. Okay. ये जरूर याद रखना है, द करंट गवर्नर ऑफ पंजाब की है बनवारी लाल पुरोहित। नैक्सट क्वेश्चन से असीं गल करिए कि वट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ द नेम पंजाब। वट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ द नेम पंजाब। ये सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि लैंड ऑफ 5 रिवर, यानी 5 दरियावां दी धरती। सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। नैक्सट क्वेश्चन साडे कोल आंदा है, विच सिटी ऑफ पंजाब इज़ अ फेमस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पोर्ट्स गुड। स्पोर्ट्स गुड की मैन्युफैक्चरिंग की जी सिटी मनी गई अपनी कि है जलंधर। डी इसका सही उत्तर होएगा। नैक्सट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल सही आंसर की है ए, गोपीचंद भार्गव फॉर द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन साडे कोल आंदा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पंजाबी फोक डांस इज़ नॉट अ डांस फॉर्म फॉर मेल्स। इन्हां विचों किहड़ा फोक डांस जिहड़ा मेल्स का नहीं है वो किहड़ा है? बिल्कुल सही आंसर है सम्मी। सम्मी आंसर इसका होएगा। नैक्सट क्वेश्चन कहते फॉर द ईयर 2020 हु वॉन द साहित्य अकैडमी अवॉर्ड फॉर पंजाबी लैंग्वेज। फॉर पंजाबी लैंग्वेज साहित्य अकैडमी अवॉर्ड, इसका सही उत्तर की है? आंसर है गुरदेव सिंह पपूना। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन, वट वाज द थीम ऑफ पंजाब W इन द रिपब्लिक डे परेड 2021 एट न्यू दिल्ली। द थीम ऑफ पंजाब W इन द रिपब्लिक डे परेड जी है ये किन्ना दी लई हुई है? आंसर की साढ़े को आंदा है बड़ा फेमस नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो आंसर की आंदा साढ़े को बी, मार्टीडम ऑफ गुरु तेग बहादुर जी। ठीक है। सो नैक्सट क्वेश्चन, विच सिटी इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब। ये सानू सारे नू पता है। आंसर की है साडा चंडीगढ़। सी इसका सही आंसर होएगा। नैक्सट क्वेश्चन, विच रिवर सेपरेट द मालवा एंड दुआबा रीजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच रिवर सेपरेट्स द मालवा एंड दुआबा। इसका सही आंसर की है साढ़े कोल ए, सतलुज। सतलुज इसका बिल्कुल सही आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पंजाबी स्पीकिंग पीपल। अगर तुहानू लगदा इंडिया, तो इंडिया इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट नहीं होएगा। इफ़ योर आंसर इज इंडिया, दैट इज़ नॉट करेक्ट। पाकिस्तान हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ पंजाबी स्पीकिंग पीपल इन द वर्ल्ड। द टोटल नंबर ऑफ पंजाबी स्पीकिंग पॉपुलेशन इन पाकिस्तान अराउंड 8 crore, whereas India has only around 3 crore people who speak Punjabi. So is the right answer की है D, Pakistan. Pakistan has the highest number of Punjabi speaking people in the world. Okay जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आंदा है, विच सिख जनरल conquered
Delhi and unfurled a Nishan Sahib at Red Fort? ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਭਾਈ ਬਘੈਲ ਸਿੰਘ। ਕਿਉਂਕਿ in March 1783 Sikh force conquered Delhi and entered Red Fort under the leadership of Bhai Baghel Singh. Okay जी, next question. Which city was the capital of Punjab before India got independence? ये तो सानू पता है कि लाहौर was the capital of Punjab before India got independence in 1947. तो आंसर क्या आएगा साढ़े कोल? लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है साढ़े कोल, हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब? हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब? Captain Amrinder Singh is the current Chief Minister of Punjab, and it is his second term as CM of Punjab. Okay जी, next, very important, who became the Chief Minister of Punjab most number of times? इसका आंसर क्या आंदा है? प्रकाश सिंह बादल as the honor of becoming Chief Minister of the state most number of time. Prakash Singh Badal stayed 5 times in the years 1970 70 प्लस उस तो इलावा साढ़े कोल आंदा है 77, then 1997, ठीक है, ਤੇ ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2007 ਵਿੱਚ 2007 ਪਲੱਸ 2012। ਓਕੇ ਜੀ, he became a chief minister of the state 5 times in the years. Next question. Which of the following Punjabi folk dance is not dance form for female? जी इसका आंसर की होएगा? जुगनी। जुगनी is a form of traditional Punjabi dance performed by males, because Gidda, Kikli and Jago are traditional dance for females, but Jugni is a form of traditional Punjabi dance performed by males. Okay, so next question. There is a railway link between New Delhi and Lahore, Pakistan. On this route, which is the last railway station on Indian side? ਇਹ ਵਾਲਾ क्वेश्चन जेल वार्डन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਅਟਾਰੀ। ਇਹ जेल वार्डन ਦੇ एग्जाम 'ਚ ਆਇਆ क्वेश्चन। द लास्ट रेलवे स्टेशन ऑन इंडिया साइड इज़ अटारी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following crops is shown in the official seal of Punjab government? इसका राइट आंसर की होएगा? पैडी है, शुगर केन है, मेज़ या वीट? तो इसका आंसर की है? वीट। वीट इज शोन इन द सील ऑफ पंजाब गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ते चलते हैं। साਡਾ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच रिवर डिवाइड्स द मालवा एंड दुआबा रीजन ऑफ पंजाब? तो इसका आंसर क्या आएगा? ए सतलुज। द एरिया ऑन द नॉर्थ ऑफ सतलुज रिवर इज़ कॉल्ड दुआबा एंड द एरिया ऑन द साउथर्न साइड ऑफ रिवर इज़ कॉल्ड मालवा। ये जरूर याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक मेरे ख्याल में शायद ये जेल वार्डन च ही आया वाला क्वेश्चन भी। नेक्स्ट, विच फ्रूट is produced in highest quantity in Punjab? ये इसका आंसर की होएगा? Actually amongst the fruit produced in Punjab, किनू is produced in largest quantity. so इनका आंसर क्या आएगा? किनू। ओके जी, जिस कारण अबोहर ਨੂੰ कैलिफोर्निया ऑफ पंजाब भी कहा जाता है। ग्रोन मेनली इन फाइलका, फिरोजपुर, मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट, ये वाले लगते हैं अंदर।
ਸਕੀਨੋ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰੀडम फाइटर किल्ड अ ब्रिटिश ऑफिसर इन ब्रिटेन। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਊਧਮ ਸਿੰਘ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ, the former British officer Michael O'Dwyer in London. Michael O'Dwyer was the governor of Punjab and was responsible for Jallianwala Bagh massacre. Very, very important. Next question. Next ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਆਰ ਦੇਅਰ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਵੀ ਜਸਟ ਹੁਣੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ 'ਚ ਹੀ ਆਇਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨਵਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, 23 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਰ ਆਰ ਟੋਟਲ 23 districts in Punjab. The latest additions to the list of district is Malerkotla, which was carved out of Sangrur district in 2021. Before this, 2 districts, Pathankot and Falka, were formed in 2011. ये जरूर याद रखा जी। Next question. Which is the state tree of Punjab? शीशम यानी टाली is the right answer. ओके जी। नेक्स्ट, वारिस शाह, फेमस पंजाबी पोइट, इज़ नोन फॉर द पोइटिक नरेशन ऑफ विच रोमांटिक स्टोरी। इसका आंसर क्या आएगा? वारिस शाह इज़ द मोस्ट नोन फॉर राइटिंग हीर, a patriotic narration of love story of Heer and Ranjha. Very, very important. Next, which of the following city of Punjab has an international cricket stadium? As the right answer की है, there is an international cricket stadium located in Mohali. Mohali यानी SAS नगर city. Okay जी। Next question. Next ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ Emperor Akbar was enthroned at which place? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਲਾਨੌਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਨੂੰ 1556 Akbar was enthroned in 1556 at Kalanaur town, which is located near Gurdaspur city in Punjab. Okay, Kalanaur. Next, which town of Punjab is known as Guru Ki Kashi? गुरु की काशी अमृतसर आएगा, तलवंडी साबो या किरतपुर साहिब या डेरा बाबा नानक। तो तलवंडी साबो अ टाउन इन बठिंडा डिस्ट्रिक्ट इज़ नोन विद द टाइटल ऑफ गुरु की काशी। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the relics of the Harappa civilization period were found from which place of Punjab? Very important. A number of relics belonging to the almost 3000-year-old Harappa period were found from Sangol, also called as Uchapind. Sangol, very important. Sangol ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। नेक्स्ट, पुरानी साइट है संगोल काफ़ी। आफ्टर इंडिया गोट इंडिपेंडेंस, पेप्सू स्टेट वाज फॉर्म्ड बाय मर्जिंग सम प्रिंसली स्टेट्स ऑफ पंजाब रीजन। हाउ मैनी प्रिंसली स्टेट्स वर पार्ट्स ऑफ पेप्सू? ये तो सारे पता है, 8 अपनी रियासतां मिलाइया गई सी। पेप्सू स्टेट वाज फॉर्म्ड बाय मर्जिंग 8 प्रिंसली स्टेट्स, टोटल 8 सीगियां। 8 ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਪਟਿਆਲਾ, ਜੀਂਦ, ਨਾਭਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਕਲਸੀਆਂ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸਦਾ? 8 ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੂ ਸੈਟ ਔਨ the throne of Lahore Darbar after the death of Maharaja Ranjit Singh? Lal Singh Dogra,
खड़क सिंह, दलीप सिंह या कश्मीरा सिंह। सो इसका की आएगा कि आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रणजीत सिंह इन जून 1839 हिज एल्डेस्ट सन खड़क सिंह सेट ऑन द थ्रोन ऑफ लाहौर दरबार। सो इसका आंसर की है खड़क सिंह। ही रूल्ड द एम्पायर फॉर लेस दैन 2 ईयर एंड मर्डर्ड इन नवंबर 1840। ये सारे पता होगा जिन्होंने महाराजा रणजीत सिंह टॉपिक पढ़िया होया। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the name of the memorial built by Punjab government at Kartarpur? जंगे आज़ादी मेमोरियल is the right answer है। The memorial highlights the contribution of Punjabi community in the struggle for India's independence. Okay, so next question, who was the first one to the establish Sikh rule? ये मोस्ट प्रॉबेबली लगता है कि आंसर महाराजा रणजीत सिंह होगा, बट आंसर की है बाबा बंदा सिंह बहादुर वॉज अ फर्स्ट सिख रूलर। ही इस्टेब्लिश सिख रूल इन 1710 बाय विनिंग द बैटल विद द मुगल आर्मी एट चप्परचिड़ी। इन द मेमोरी ऑफ दैट वॉर देयर इज़ अ मेमोरियल नेम्ड फतेह बुर्ज विक्ट्री टावर एट चप्परचिड़ी मोहाली। सो राइट आंसर की है बंदा सिंह बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, when did the first Anglo-Sikh War started? Very important. 18 December 1845. 18 December 1845 is the सही आंसर होएगा। Okay. Next, which of the following places is famous for arrival of migratory bird? So Harike Wetland, also known as Harike Patan, is the most famous place in North India for arrival migratory bird. The right answer is Harike Wetland. Next question, Jalandhar city is famous for which of the following industry? ये सारे पता है कि जलंधर is famous for sports good manufacturing industry in India. The sport items are supplied all through India and also exported to many other countries. So right answer A, sports goods manufacturing. Okay जी, next, the shape of today's Punjab is similar to which of the following geometrical figure? Actually, on the map, the shape of Punjab look like a triangle. Pathankot district is at the top corner of the triangle, Falka district is the left corner, and Patiala district is near the right corner of triangular shape. Okay, so right answer is triangular. Next question, which is the largest district of Punjab? Very important, Ludhiana is the largest district of Punjab, both by area and population. Next question, which is the birthplace of Shri Guru Gobind Singh Ji? अभी पता ही होना सारे ਨੂੰ। Shri Guru Gobind Singh Ji was born in 1666 at Patna, Bihar. Okay. Next, the insurance scheme of Punjab government for the poor people is named after which person? गुरु हरकृष्ण जी, मदर टेरेसा, भगत पुराण सिंह या मास्टर तारा सिंह? आंसर की है भगत पुराण सिंह इज द राइट आंसर होएगा, बिकॉज भगत पुराण सिंह सेट बीमा योजना, सेहत बीमा योजना आफ्टर द नेम ऑफ भगत पुराण सिंह जी, who dedicated his whole life to the selfless service of humanity and founded Pingalwada in 1947. So, as answer की है भगत पुराण सिंह। Next question, who is the current Deputy of Chief Minister of Punjab? Current Deputy Chief Minister of Punjab, नवजोत सिंह सिद्धू, ब्रह्म महिंद्रा, राणा KP सिंह या नन ऑफ दिस? एक्चुअली इन्हें कोई नहीं है। द करेक्ट आंसर इज नन।
There is no deputy CM in the states. There is no constitutional position of a deputy CM in Punjab, and it is choice of the chief minister to appoint his deputy to assist him in the governance. Okay. Next question. Which of the following dams are built on Beas River? Very, very important. Pong Dam and Pandho Dam are the built on the Beas River. Pong Dam, also called as Maharana Pratap Sagar, is located in Kangra district of Himachal Pradesh. So is the right answer here Pong Dam. Okay ji. Next question. Fateh Burj Victory Tower, constructed in the memory of Baba Banda Singh Bahadur, is situated in which city? In which city? Right answer key is the Fateh Burj is located in Chapparchiri village in Mohali. And this place is on the Kharad Landra main road. Okay. Next question. Which place is the confluence point of Satluj and Beas River? As answer क्या होगा? हरिके wetland यानी हरिके पतन is the confluence point of Satluj and Beas River. It is one of the largest wetlands of North India and is famous for arrival of migratory bird during winters. Okay जी. Next question. President rule in Punjab, which lasted for the longest duration, was started in which year? Punjab has seen president rule for total 8 times. President rule that was started in the year 1987 and lasted for almost 5 years till 1992 was the longest duration. So 1987 is the right answer. Next. जैसी गल करिए what is the percentage of agriculture cultivated land to the total land area of Punjab? 43%, 67%, 23%, 82%. So Punjab is one of the most fertile region of India and almost 82% of the total land is used for agriculture. 82%. Rest of the land in urban area or forest, etc. Okay. Next question. Which of the following revolutionaries threw bombs at Central Legislative Assembly in Delhi? Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt. Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt were involved on this bombing of Central Legislative Assembly on 8 April 1929. So right answer Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt. And okay. Next question. Which is the state bird of Punjab? Which is the state bird of Punjab? Peacock, black francolin, northern goshawk या western tragopan. So is the northern goshawk is also called Bach in Punjabi and Hindi is the state bird of Punjab. The national bird of India is peacock. The right answer is northern goshawk. गोशाक ਇਹਨੂੰ ਬਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਾਜ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਰਥਰਨ ਗੋਸ਼ਵਾਕ ਆਨਸਰ ਲੱਗੂਗਾ नेक्स्ट क्वेश्चन what is the ratio of Hindu and Sikh population in total population of Punjab? The correct answer is A. The ratio of Hindu and Sikh population is 38.49% and 57.69% respectively. Okay ji. Next. Which character of Ramayana are believed to be born at Ram Tirth, Amritsar? Ram Tirth temple is the birthplace of Love and Kush, the son of Lord Rama. Love and Kush. This place was the hermitage of Maharishi Valmiki. Sita, after being deserted by Ram, lived at this place and gave birth
to Love and Kush. Very important. Next question. Who was the founder of President of Ghadar Party? So Sohan Singh Bhakna was the founder president of the Ghadar Party. Sohan Singh Bhakna. Very very important. Ghadar Party was founded by Punjabi Indians living in USA. Was founded by uh, uh, Punjabi Indians living in USA and Canada with the purpose of liberating India from the British rule through revolt or rebellion. So Sohan Singh Bhakna is the right answer. Next question. When was Kartar Singh Sraba executed? Kartar Singh Sraba was executed on 16 November 1915. 16 November 1915. Right answer. Next question. Who is the Education Minister of Punjab? ये सारे को पता है. विजय इंदर सिंगला is the current Education Minister of Punjab. B is the right answer. Next करिए. Which city of India is known as Golden City? ये सारे को पता ही है ना. Amritsar is known as a golden city as a golden temple. A popular shrine of Sikh religion is located in the city. Amritsar. Next. When was Shahid Bhagat Singh born? Bhagat Singh 28 September 1997 at Banga village, Tehsil Jaranwala in Lailpur district of Punjab, now in Pakistan. 28 September 1997. Right answer. Next question. What is the total number of police stations and police posts in Punjab? The total number of police stations and police posts in Punjab is 569. There are 405 police stations and 164 police posts. The in charge of police station is called SHO, station house officer, and generally an inspector rank officer is appointed SHO, but at some places it can be policeman of higher and lower rank. In which actually 569 जड़ा है वो आंसर सी. ओके, ऑप्शन इन मिस हो गई. सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फिर. Next, Kapurthala city is known on the industrial map of Punjab for which of the following manufacturing unit? So, answer की होएगा. Kapurthala city is known on the industrial map of Punjab, the rail coach factory. Kapurthala is the one of the biggest industrial unit of Punjab. Rail coach factory है. Very very important. ये वाला भी. Next question. Who is the first lady to become an IPS, Indian Police Service officer? Everybody know that Kiran Bedi joined IPS in 1972 and became the first lady IPS officer. She was born and brought up in Amritsar city of Punjab. Kiran Bedi. Okay, next question. According to the 2011 census, how much is the total population of Punjab? 2.77 crore. Right answer. Next question. The famous Punjabi novel Pavitr Papi was written by which of the following novelist? So is the right answer ki Nanak Singh. Nanak Singh, the most famous Punjabi novelist, was the writer of Pavitr Papi in 1970. A film Pavitr Papi was made based upon this novel. Okay, next question. Kanjli wetland is situated on which river? Kanjli wetland is situated on the Kalibia river.
बी इज़ द राइट आंसर होएगा। नैक्सट जे असीं गल करिए तां चंडीगढ़ द कैपिटल ऑफ पंजाब इज़ ऑल्सो कैपिटल ऑफ वन मोर स्टेट। कैन यू नेम दैट स्टेट? द करेक्ट आंसर इज डी, हरियाणा। Chandigarh is a union territory and is capital of both Punjab and Haryana. Okay जी, next question. According to the 2011 census, which district of Punjab has the highest literacy rate? फिरोजपुर, गुरदासपुर, हुशियारपुर या बठिंडा? According to the 2011 census, Hoshiarpur district has the highest literacy rate. Hoshiarpur, I think 84.6 percent, maybe शायद 84.6 है। Hoshiarpur is right answer. Okay. Next question. Which city of Punjab was known as Virat Ki Nagari? Daswa town is district Hoshiarpur is called as Virat Ki Nagari. B is the सही आंसर होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू एरिया पंजाब इज एट विच रैंक अमंगेस्ट ऑल द 28 स्टेट्स ऑफ इंडिया? टोटल एरिया ऑफ पंजाब 50,362 स्क्वेयर किलोमीटर विच इज़ अराउंड 1.5% of India total area. On the basis of area, Punjab is at 19th rank among all the state of India. Rajasthan is the largest state by area. So right answer key is the A, 19. Next question. Which of the following dams are built on Satluj River? Nathpa Jhakri Dam and Bhakra Dam are built on the waters of Satluj River. Both these dams are located in Himachal Pradesh. So right answer is Nathpa Jhakri Dam and Bhakra Dam. D is the सही आंसर होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, साडा नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अरेंज द कामागट्टा मारू शिप फॉर वॉयज टू कैनेडा? इसका आंसर की होएगा साडे कोल सही? इहदा सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, बाबा गुरदीप सिंह संधू। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ पंजाब? ब्लैक बक यानी काला हिरन इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ पंजाब. These animals are found mainly in the Abohar Wildlife Sanctuary. Very important. Next question. Ram Tirath temple located near Amritsar city is dedicated to which Lord या संत? Lord Ram, Shri Krishna, Bhagat Kabir, Maharishi Valmiki. So this temple is dedicated to Maharishi Valmiki. There is an ancient hermitage at this place, and it is a belief that Maharishi Valmiki lived at this place. So right answer Maharishi Valmiki ji. Next question. How many districts of Punjab are located along international border with Pakistan? There are 6 border districts in there are six border district in Punjab share the boundary with Pakistan. These districts are किहड़े लगदे? 6 पठानकोट है, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन ताਰਨ, फिरोजपुर ते फाजिलका. Next. What is the total number of MP seats in Punjab? Very important. As the right answer की है, the total number of MP seats in Punjab is 20. Okay, and most of readers will answer 13, which is incorrect. ज़्यादातर 13 लगता है पर वो गलत है. राइट आंसर की है 20. ये सी साडे पंजाब जीके दे रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिहड़े कि पंजाब कॉम्पीटेटिव एग्जाम्स दे विच काफ़ी पूछे भी जाते हैं. अगर तुहानूं ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जरूर लाइक ते शेयर
ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।